Hello, aspirants. Welcome to Vidyadality. Your revision starts here with Grammar Marathon. In this marathon, we will break down important grammar rules step by step. Whether you are preparing for government exam or any kind of competitive exam, or just want to improve your English, this is the place to be. So let's get started. So ये विद्याडालिटी चैनल है. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको प्लीज शेयर भी कीजिएगा लोगों तक. तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. So your revision starts here. This is our tagline. So master English grammar in 100. तो हमने ट्राई किया कि पूरी ग्रामर को 100 रूल्स के अंदर पूरा कंपाइल करना. और ये आज की जो वीडियो है स्पेसिफिकली खाली एक मैराथन काइंड ऑफ वीडियो है. जैसे कि जिन लोगों ने पढ़ रखा है ग्रामर के बारे में और वो रिवाइज करना चाहते हैं या कुछ भी चीज करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए वीडियो है, क्योंकि ये ज्यादा इन डेप्थ या डीप वीडियो नहीं है हर एक रूल के ऊपर. ठीक है. तो हम आने वाले टाइम के अंदर जो अपनी हर एक रूल के ऊपर हर एक जो टॉपिक जो हम लेकर आ रहे हैं, ये सारे वो 11 टॉपिक्स हैं, जिनके अंदर हमने हर टॉपिक के अंदर 2 यूनिट डिवाइड करी है और हर यूनिट के अंदर 5 रूल्स को हमने कंपाइल किया. इन 5 रूल्स के साथ साथ आपको हर रूल के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिससे आप हर एक रूल्स के अंदर अपनी परफेक्शन ला पाए. तो बाकी लोगों के लिए एक प्रीफेस काइंड ऑफ वीडियो भी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं ये अपने 100 रूल्स के अंदर. तो ये वही वीडियो. तो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग करेंगे उससे जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, वॉइस एंड नरेशन, कॉमन मिस्टेक, मॉडिफायर्स एंड क्लैरिटी एंड सेंटेंस टाइप. तो ये सारे हम टॉपिक्स जो है हमारे कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में भी और अपने 100 रूल्स ऑफ ग्रामर के अंदर. तो हम अपने पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हमारा नाउन एंड प्रोनाउन. ज्यादा इन डेप्थ वीडियो नहीं रहेगी अभी फिलहाल के लिए, ये खाली एक रिवीजन काइंड ऑफ वीडियो है, तो इसको प्लीज उसी टाइप से कंसिडर करिएगा. सो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जांपल रिया, स्कूल, एप्पल. प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन. तो प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है. सो हम 2 बारी नाउन यूज करने की जगह हम एक जगह प्रोनाउन यूज करते हैं. तो रिया इज काइंड, शी हेल्प्स एवरीवन. सो शी इज प्रोनाउन. Singular noun talks about one thing, example cat. Plural noun talks about many things, example cats. He, she, it are singular pronoun, example he is my friend. They, we, you are plural pronouns, example they are playing. I, you, he, she are used as subjects. Subject is this. So we use I, you, he, she as subjects. She sings well. Me, him, her, us are used as objects. Example, give it to me. So this is object. My, your, his, her shows possession. Example, this is my book. So this shows possession, which means ownership. Okay, so reflexive noun end in self. तो रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होता है, जो सेल्फ में एंड मतलब एंड जिस जो वर्ड एंड में सेल्फ करता है. आई हर्ट माई सेल्फ. तो ये हमारी पहली स्लाइड थी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो हमारा क्या है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव. बॉल हेयर इज नाउन एंड रेड इज एडजेक्टिव व्हिच इज डिस्क्राइबिंग द नाउन. अ रेड बॉल. सो बॉल इज नाउन एंड रेड इज एडजेक्टिव. तो नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है. Adverb describes a verb. She runs fast. So run here is verb and fast is adverb. तो adverb क्या करता है, हमारा verb को describe करता है. तो ये हमारा किसके बाद आता है, verb के बाद में आता है. Adjective हमारा noun से पहले आता है जो हमारा noun को describe करता है, और verb को जो describe करता है वो हमारा adverb होता है, वो verb के बाद में आता है. So good is an adjective. तो good क्या है, हमारा adjective है जो हमारा noun से पहले आएगा. और वेल क्या है, हमारा एडवर्ब जो हमारा वर्ब के बाद में आएगा. सो शी इज अ गुड डांसर. तो डांसर इज नाउन एंड गुड इज एडजेक्टिव. शी डांसेस वेल. तो डांसेस इज वर्ब
and well is adverb. Okay. Now use er to compare two things. Example, my car is faster than yours. So we are using er to compare two things. Use esc to compare three or more things. Example, he is the tallest boy. Okay. Use more and most with long adjectives. Example, she is more beautiful than her sister. एडजेक्टिव कम, जो मैंने ऊपर बताया भी, एडजेक्टिव कम बिफोर नाउन. नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. अ बिग हाउस, तो नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव. एडवर्ब कहाँ आता है? आफ्टर नाउन. तो ही स्पीक्स क्लियरली, तो स्पीक इज वर्ब, क्लियरली एडवर्ब. Much is for things that you can't count. Okay, so much water that you can't count. And many is for things that you can count. So many apples. So next topic पे आता है जो है tenses. So present tense is for now, जो अभी के लिए. I eat lunch. Past tense is for before. I ate lunch. Future tense is for later. I will eat lunch. Okay. तो ये हमारे सिंपल के हो गए. Present continuous is happening now. Is happening now. I am eating. Past continuous is was happening before. Was happening before. So I was eating. Future continuous will be happening. Will be happening. Okay. Present perfect means just finished. So I have eaten. Past perfect means finished before something else. I had eaten before he came. Here, future perfect means will be finished. So I will have eaten. So don't mix tenses in one sentence. Example, he went home and slept. Okay. So next topic पे आता है subject verb agreement. Singular subject, singular verb. She eats. Plural subject, plural verb. They eat. He, she, it needs verb with s. He plays. Verb with s. I, you, we, they don't need s. Don't need s. They play. Each, every, everyone is singular. Each, every, everyone is singular. Example, everyone is happy. Either or matches the close subject. Which is what is close subject? Either Ria or her friend. So this is close subject. Are coming. So this doesn't change the either or matches the close subject. Okay. So none can be singular or plural. So none singular भी हो सकता है, plural भी हो सकता है. So none of the boys are here. None of the boys are here. One of the is followed by plural noun. Okay, plural noun. One of the apples. So apple here is noun. So it's plural noun is rotten. One of the apples is rotten. Together with, along with, don't change the verb. Example, Ria, along with her friend, is coming. Don't change the verb. The number of is singular. Example, the number of students is high. So number of is singular. Now, next topic is preposition. In is used for months and year, like in July in 2020. On for days and dates. On Monday, on 5th of June. At is for time. Example, at 5 p.m. By shows who did it. By shows who did it. The cake was made by mom. So who made the cake? So cake was made by mom. Which shows tool. Which shows tool. He cut it with a knife. He cut it with a knife. From shows starting point. From shows starting. I came from school. I came from where? From school. So from shows starting point. Of shows belonging. The color of the sky. So of shows belonging. Between is for two. Between is for two. Example, between Ria
and Meena. Between is for two. Among is for more than two. Among is for more than two. Among all students. Okay. Beside means next to. Sit besides me, sit next to me. So this is there. Now the next topic is conjunctions. Add, join similar things. Add, join similar things. Add क्या join करता है? Similar things. Like apples and bananas. So add क्या join करता है? Similar things को join करता है. But shows difference. But क्या show करता है? Difference. I am tired but happy. डिफरेंस शो कर, मैं थका हुआ हूं मगर मैं फिर भी खुश हूं. और शोज चॉइस. और क्या शो करता है? चॉइस. टी और कॉफी. बिकॉज शोज रीजन. आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड. सो दिस इज द रीजन क्यों मैं क्यों सोया. आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड. इफ शोज कंडीशन. इफ क्या शो करता है? कंडीशन. इफ इट रेन वी विल स्टे होम. हम घर क्यों रहेंगे? हम जब अगर बारिश पड़ती है तो इट क्या शो कर रहा है? कंडीशन शो कर रहा है. Although shows contrast. Although show करता है contrast. Although it was cold, we went out. Although it was cold, बाहर बहुत ठंडी मगर फिर भी बाहर. तो ये contrast शो कर रहा है. So shows result. He was late, so he missed the bus. इस यहाँ पे क्या रिजल्ट शो करा? He was late. वो लेट था तो वो बस मिस कर चुका था. So shows result. Not only but also adds extra. Not only but also क्या करता है? एक्स्ट्रा को ऐड करता है. She is not only smart but also kind. So not only but also क्या करता है? एक्स्ट्रा को ऐड करता है. Either or shows choice. Example, either you or I will go. तो यहाँ पे क्या आ गया? चॉइस आ गया. Neither nor shows rejection. सीधा रिजेक्शन. Neither Riya nor Meena came. सीधे. तो नीदर नॉर क्या करता है? शो रिजेक्शन शो करता है. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और हमारा रूल नंबर 61 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर. अ बिफोर consonant sounds. A before consonant sound. Example, a dog. An before vowel sound. Example, an apple. The for specific things. Example, the sun. No article before names. No article before name. Example, Riya is here. A Riya is here will be grammatically wrong. Use the with unique things. The moon. Use a and with general things. Example, a book. So this is general thing. Don't use the with meals. Example, I had lunch. I had the lunch will be grammatically wrong. Use the with superlative. Example, the best student. So best is superlative. Use an with silent H. Use an with silent H. Example, an hour. An hour ago. So H here is silent. Use a with you sounding you. Okay. Use a with you sounding like you. University. A university. Not an university. Okay. Because it's sounding like you. So a university. Now we are on our next topic, that is voice and narration. So active voice. Subject does the action. Okay. Subject does the action. What? Ria wrote a letter. So subject is does the action. So Ria wrote a letter. So this is active voice. Passive voice. Subject receives the action. Subject receives the action. A letter was written by Ria. The subject is receiving the action. Use passive when doer is unknown. Doer is unknown. The window was broken. The doer is unknown. So this is passive. The window was broken. Broken by whom? The doer is unknown. Change tense properly in passive. Example, she eats को हम जब passive voice में change करेंगे तो it is eaten करेंगे. Only transitive verb can be passive. Transitive verb, she sing a song is sung. So she sing a song को हम transitive verb में change करेंगे तो song is sung. तो इसमें ऐसे change होगा. तो transitive verb के और भी the dog ate the bone. The dog ate the bone. So ate here is transitive verb. Okay.
Direct speech, extra word. Example, he said, I am happy. Direct speech, exact word. Sorry, exact word. So I am happy. He said, I am happy. So whatever he said directly, so we are using that only. I am happy. Indirect speech, reported words. Example, he said he was happy. तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे. Change pronoun in indirect speech. Example, I change होगा he she. Change time words in indirect speech. Example, now change होगा then पर. Change ten one step back. हम चेंज टेंसेस को जब चेंज करेंगे तो एक स्टेप पीछे करेंगे. He said he ate. ओके, तो हम अपने कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर आ जाते हैं. ये थोड़ा अलग टॉप, थोड़ा कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर. तो इट इज, इट्स, इट इज, इट इज, इट्स shows belonging. Example, it is raining और the dog wagged its tail. तो wagged its tail is belonging, अपनी टेल को हिला रहा. So your is belonging, you are. So your book is here. So this shows belonging and you are smart. There shows belonging and they are and there. Okay, so there is place, there is belonging. Example, their house is big. So this shows belonging. They are happy. वो खुश हैं. I live there. So this is for place. Lose, misplace. Lose, not tight. Example, don't lose your key. Okay, don't misplace your key. And my shirt is loose. मेरी shirt ढीली है. So loose is for not tight. Then is used for time. Than for comparison. Example, I came then. So this is for time. She is taller than me. So I'm comparing myself from her. So she is taller than me. Accept is receive. Accept, not including. Accept is receive and accept, not including. Example, I accept your gift. So I am accepting your gift. Okay. So I am receiving your gift. So everyone came except Ria. उसको छोड़ के, not including. Okay. अब है affect is verb, effect is noun. Affect is verb, effect is noun. The news affected me. I had a big effect. Okay. Now farther means physical distance. Further means more or extra. Okay. Delhi is farther than Agra. Let's discuss this further. ठीक है, तो more या extra. Now fewer is countable and less is uncountable. Example, fewer students came. I have less water. So less is for uncountable and fewer is for countable. Who who is used as subject and who is for object. Who called you? So is subject. Whom did you call? So it's object. अब हम अपने लास्ट 10 रूल्स पर आ रहे हैं. तो यहाँ पर पहला है मॉडिफायर्स एंड क्लैरिटी, जो हमारा टॉपिक है. Keep modifiers close to the word they describe. She almost drove for 5 hours. She drove almost for 5 hours. Okay. Avoid double negativity. Avoid double negatives. So I don't need no help. I don't need no help. So don't use double negatives. I don't need any help. So this is grammatically correct. Use parallel structure in list. She liked dancing, singing, and painting. So parallel structure. Avoid wordiness due to the fact that, so simply use because. Don't use like extra word in a sentence due to the fact that, so you simply use because. Use active voice for clarity. Active voice for clarity. The teacher explained the rule. Not the rule was explained by the teacher. So this is grammatically wrong. अब हम अपने लास्ट सेट पर आते हैं, जो है सेंटेंस टाइप. So simple sentence is equal to one idea. I read book. Okay. Now compound sentence, two ideas joined by conjunction. Two ideas joined by conjunction. I read books and write notes. Okay. I read books, two ideas and joined by conjunction. I read books and write notes. Now complex sentence, one main, one dependent clause. I read books because I enjoy learning. So this is dependent clause. Now compound complex sentence. Compound complex sentence. Two main, one dependent clause. Okay.
I read book and write notes. So this is two mains and one dependent clause because I enjoy learning. So this is dependent clause. Now use punctuations to separate ideas clearly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं. Let's eat punctuation grandma. Let's eat grandma versus let's eat grandma. So सिर्फ एक पंचुएशन की वजह से पूरे सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है. तो ये भी हमारे को समझ कर रखें. सो इसी के साथ हमारे पूरे 100 रूल्स जो भी हैं जो हम अपने ग्रामर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं. और दिस इज ऑल फॉर टुडे. और चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. 100 रूल्स ऑफ ग्रामर के हर एक रूल के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहे. नेक्स्ट वीक से 100 रूल की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है और रोज एक वर्ड ऑफ द डे आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम रोज डालते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. और चाहे विद्या डायलिटी को आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करना. Thank you for watching. This side Kunal Kohli signing off.